Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you again to this very important and special series of MCQs, which are based on the meaning and features of accounting. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स पहले ही डिस्कस किए हैं, इसमें से मीनिंग, फीचर्स, प्रोसेस, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वगैरह ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। तो आगे बढ़ने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमें ये टॉपिक्स अच्छी तरह समझ में आए हैं कि नहीं। तो इस बारे में हमने कुछ MCQs को आंसर करना है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बुनियादी मकसद क्या है? The answers here are there are four options. The first one is to eliminate all business debt, to systematically record, classify, summarize, analyze, and interpret financial transactions, to maximize sales revenue only, and to manage the last one to manage the human resource of company. You can make a guess. Let us wait. I hope you have selected the second option, that is to systematically record, classify, summarize, analyze, and interpret the financial transactions. This is the correct option. This is the correct answer for the above question. So this is the first one. Next one is, which of the following is not a key feature of accounting? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सी option which is not the key feature of accounting. The first one is recording only cash transactions, summarizing data in financial statements. Third one is analyzing and interpreting financial results. And the last one is communicating information to users. But we have to see which is not a key feature of accounting. You can make a guess. And the correct answer for the above question is, that is recording of only cash transactions, because accounting does not deal only with cash transactions. Accounting deals with both cash as well as credit transactions. So the correct option is the first one, that is A. And the last question, the third one, that is, it is not the last, it is the third one, that is, the accounting is often called as language of the business because accounting को business की भाषा कहा जाता है। क्यों? It uses complex jargons. Second one is, it communicates financial information to various stakeholders. Next one is, it is only understood by accountants. Last one is, it is spoken in multinational companies. You can make a guess. Accounting को business की भाषा क्यों कहा जाता है? Because it communicates फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स। अकाउंटिंग को इसलिए बिजनेस की भाषा कहा जाता है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाता है। सो नाउ द फोर्थ दिस क्वेश्चन इज, विच फीचर ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस को याद दिलाओगे, इफ़ यू जस्ट रिमेंबर द अकाउंटिंग प्रोसेस, तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है विच डील्स विद involves with grouping transactions of similar nature. Which feature of accounting involves grouping transactions of similar nature? इसमें से ऑप्शन जो है इंटरप्रेटिंग, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग. You can make a guess. And the correct option is this one, classification, जिसको मैंने कहा था क्लासिफाइंग को हम पोस्टिंग भी कहते हैं, एंड वी डू पोस्टिंग इन अ बुक दैट इज कॉल्ड लेजर. तो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल डेटा इज नोन एज. यानी जो अकाउंटिंग डेटा, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मीनिंग और उनकी इंपॉर्टेंस को कैसे एक्सप्लेन, कहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस के किस स्टेप पे एक्सप्लेन किया जाता है, बुक कीपिंग में, इंटरप्रिटेशन में, क्लासिफिकेशन में, रिकॉर्डिंग में. यू कैन मेक ए गेस. बुक कीपिंग, इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, यू कैन मेक ए गेस, दैट इज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन में ही अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को, उनकी मीनिंग और सिग्निफिकेंस को निकाला जाता है और वो कम्युनिकेट किया जाता है उसके बाद अकाउंटिंग यूजर्स को. एंड द लास्ट वन इज, विच ऑफ दीज इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. विच ऑफ दीज,
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, रिलायबिलिटी, सॉल्वेंसी. Profitability, liquidity, reliability, solvency. Which is the correct option? You can make a guess. And the correct answer for this question is that is reliability. Which of qualitative characteristics of accounting information? यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए. Now the next question is, that is the seventh question. The feature that ensures accounting information is free from significant errors and bias is, वो कौन सा फीचर है जो हमें बताता है कि हमारी अकाउंटिंग जो है इट इज़ फ्री फ्रॉम बायस, इट इज़ फ्री फ्रॉम एरर्स. तो ऑप्शन जो है दैट इज रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी. रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, reliability, comparability. You can make a guess. You must be knowing it. That is significant errors and bias. वो कौन सा फीचर है जो अगर अकाउंटिंग में होगा तो अकाउंटिंग जो होगी ये इट विल बी फ्री, इट इज फ्री फ्रॉम errors and bias. And the correct answer for this is, that is this one, third one, that is reliability. Reliability. When accounting is reliable, that means it is free from errors and bias. The question 8 is, which branch of accounting is focused on providing information to internal management? इंटरनल मैनेजमेंट. अकाउंटिंग का वो कौन सा ब्रांच है जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है, जो मैनेजमेंट को सारी वो इन्फॉर्मेशन देता है जो मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ती है. तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग. तो यू कैन मेक ए गेस, यू कैन फाइंड द आंसर. What is the correct answer? Financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting. The correct answer for this is, that is management accounting. Management accounting is the branch of accounting which provides information to internal management. And now the ninth one is, what is the final step in accounting process? Accounting process का final step क्या है? Recording of transactions, preparing trial balance, interpretation of results, and posting to ledger. Recording of transactions, preparing trial balance, interpretation of results, posting to ledger. Which is the correct option? अकाउंटिंग का जो फाइनल स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का, दैट इज, यू कैन मेक ए गेस, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट द प्राइमरी स्टेप, इट इज तो पहला बुनियादी स्टेप होता है. ट्रायल बैलेंस बनाना भी बुनियादी स्टेप ही है. और पोस्टिंग टू लेजर, दैट यू नो, इट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग. So the last step is that comes after the preparation of final accounts, that is interpretation of the results. Now the last question is, that is, the dual aspect principle in accounting gives rise to. हालांकि अभी शायद ये डिस्कस नहीं हुआ होगा, but this is a very important question because I have already told you that every transaction has two aspects. That is, a dual aspect principle in accounting gives rise to only income statement, only cash flow, the fundamental accounting equation, asset is equal to capital plus liability plus equity, only balance sheet. You can make a guess. You can make a guess. The dual aspect principle in accounting gives rise to income only, cash flows, asset is equal to liability plus equity, only balance sheet. And the correct answer for this is, that is, asset is equal to capital plus liability. Because dual aspect principle जो है, the principle tells us that every transaction in accounting has two aspects, that is the debit and the credit aspect. And this aspect gives rise, this principle gives rise to an accounting equation. And that accounting equation is, asset is always, all the assets of the business are always equal to capital, that is liability plus equity. Equity का मतलब होता है capital, capital का मतलब होता है what we owe to the owners of the business. business के जो मालिक हैं, business उनको क्या उधारता है, that is called equity. और liability का मतलब outsiders, यानी business के बाहर से जो हमने कर्जा लिया, that is called a liability. Now you can check again, you can check these answers. Here is the answer key. So that you remember all these answers, here is the first one, second, up to 10. So these are the 10 MCQs on the meaning and the features of accounting. We'll be discussing many more MCQs on this, and those will be discussed in the coming the special series of MCQs. And till then, I wish you best of luck.
I hope you love this, and I hope that you will share your this feedback with me, so that to improve it, so that to include more and more questions in it. And I wish you to pose, if you have any question, I will just put that in the MCQ, and we'll discuss that question in the future this process as well. And I wish you best of luck, and let us meet again. Till then, I wish Allah Hafiz, and take very good care of yourself.